Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning, everyone. Good Happy good morning, beta. morning. Yeah, very good morning. Morning. Good Uh, morning, s- beta. Good morning. Good morning. So today we have this beautiful 21st of November 2023 and a chapter, 21 chapter, सबका चहेता, सबसे commonly used chapter जो आज का है हमारा is Magnificent Outcome. And it is in series of having our prayers answered. ये जो 10 दिन है जिसमें हम work कर रहे थे कि अपने रास्ते से सारे road blocks हटा रहे थे so that our prayers could get answered. So 21st chapter जो आज वाला है, it's called Magnificent Outcome. In Hindi it's called अद्भुत परिणाम. किसी भी चीज को मतलब आपको उसमें सबसे अच्छा आउटकम अगर चाहिए, मतलब कई बार होता है ना पूरे टाइम वरीड रहते हैं, जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, सपोज एयरपोर्ट पहुंचना है, मैं टाइम पे पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, अच्छा आज बैंक का काम है, आई होप काम हो जाए, 4 बार धक्के खाए हमने, फिर काम नहीं हुआ, इनकंक्लूसिव रहा सब कुछ. So this time you want that work to be accomplished, or it is that you want to go shop for something. Suppose किसी के लिए wedding gift लेने जाना है या अपने लिए कोई मतलब occasion के कपड़े खरीदने जाने हैं, तो फिर वो डाउट कि अब आई होप मिल जाए आज कोई ढंग का, इस जगह पे पिछली बार भी ढूंढा था तो कुछ ऐसे मिला नहीं. सो ये जो सारी चीजें होती है ना, इनडिसाइसिव या डाउट, या हमारे मन में होता है कि पता नहीं दिस इज गोइंग टू हैपन, नॉट हैपन, आई रियली होप, आई रियली विश. सो वो होप और विश को आज सर्टेनिटी में बदल देंगे, अब वो होगा ही वैसा. एंड द आउटकम जो हम करेंगे अब से, if we exercise this particular practice, this outcome will be beyond our expectations. मतलब ये इतने अच्छे से unveil होता है. So that's what today's chapter is all about. Yeah, so here it goes. So this is day 21, magnificent outcome. To anything that we are doing during the course of today. आज के लिए ही चैप्टर होता है, मतलब हर दिन के लिए, उस दिन के लिए आप पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम करके थैंक यू बोल दो एडवांस में, जो भी चीज करनी है उसके लिए. एंड इफ यू सी इट हियर, दिस इज अ डोर दैट्स ओपनिंग. दैट मीन्स आप दरवाजा खोल के किसी सेगमेंट के अंदर घुस रहे हो, मतलब कोई काम करने के लिए जा रहे हो. It could be cooking the food for a family that's coming over for dinner. It could be going out shopping. It could be going for a nice haircut. So आपको बहुत टाइम से था, I just want to change my looks and I want to change my hair color, my hairstyle or whatever it is. आप वो कराने के लिए जा रहे हो, लेकिन डिसीजन वो लेने के पहले थोड़ा मन में वो था कि I just hope it works out well. या फिर आप एनीथिंग किसी को फोन कॉल कर रहे हो और फोन कॉल थोड़ा सा डिसाइसिव सा है बिकॉज आपको कुछ बात करनी थी. यू वांटेड द अदर पर्सन टू वेरी क्वाइटली, नाइसली लिसन टू यू, understand your point of view and come to a mutual agreement and understanding. अगर वैसी वाली फोन कॉल थी लाइक इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर कई बार ऐसे होता है कि नहीं नहीं उसमें तो पेशेंस ही नहीं है, that person doesn't listen properly and always bangs the phone down, we always end up arguing about something. ऐसी चीजें मन में होती है ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, जिसके कारण आउटकम भी वैसा ही होता है, क्योंकि हम वो बैकलॉग कैरी कर रहे होते हैं ना, वो बैगेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसीलिए हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस भी वैसे होते हैं. बट देन नाउ वी विल डिजाइन, remold, reshape and write a fresh story to any outcome that we want according to our wish. So we are the scriptwriter of our life. We are the painters. Write it on a blank canvas. Don't let any shades and shadows of the past come into it. Past में जैसा भी हुआ होगा, ठीक है, उसको भूल जाओ. एक नए सिरे से अपनी सारी चीजें लिखनी शुरू करनी पड़ेंगी हमको, है ना. अच्छी चीजें जो पास से है, जिनको सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आती है, उनको आप रहने दो. और लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जिनसे अच्छी फीलिंग नहीं आती है, उनको धीरे धीरे कंट्रोल ऑल डिलीट करना पड़ेगा हमें अपनी जिंदगी से, बिकॉज वही एक तरीका है आगे बढ़ने का. और वो तरीका होता है जब आप कॉन्स्टेंटली फ्यूचर प्रेजेंस में रह के फ्यूचर के बारे में अच्छी चीजें सोचो जो आपको चाहिए.
जैसे रोंडा बर्न ने पावर बुक में हमको सिखाया था व्हाट इफ, बस उन्होंने व्हाट इफ डैश 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 व्हाट इफ डैश, शी सेड कि कभी भी ऐसे लो लग रहा हो या कुछ हो रहा हो, हमेशा ये सोचो what if मतलब what if one day I start receiving so much of money, what if that happens that मेरा weight बिल्कुल 50 kg, suppose अगर आपका टारगेट था, जो भी टारगेट था x kilos, so x kilos आप पहुंच गए, what if today you are that, how will you feel, what will you do, what kind of clothes are you going to wear, कितनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर होगी, what if your business flourishes and thrives and reaches that level of say whatever 1 crore turnover. Okay, so your business has reached. Now what if the business has today reached that turnover? How are you going to feel? What are the things that you're going to do? What will be your lifestyle be like? Okay, so that is how we have to constantly keep imagining, thinking, and talking about the things that we want in the future. It could be materialistic, which is okay. It could be the other things also. It could be helping others. It could be doing your charitable work. अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये करने का बहुत मन है, या मुझे 2 गरीब बच्चों की पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करनी है, पूरे स्कूल की, पूरे कॉलेज की, तो उस तरह से कुछ भी चीज हो सकती है। हो सकता है आपको अपनी नई ब्रांच खोलनी हो कहीं पे अपने ऑफिस की, और अभी उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं है या एमिनिटीज नहीं है, अभी नहीं कर सकते, लेकिन आप सोचो कि आपका उस शहर में नया बिजनेस खुल गया है, ठीक है, या आपको घर खरीदना है। सो अब घर खरीदना है तो आप सोचो इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे से रह रहे हो, कैसा घर दिख रहा है, लोग जो आ रहे हैं आपके घर में आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो इस तरीके से जितना ज्यादा आप सोचोगे, फील करोगे, खुश होगे अपने फ्यूचर की वजह से, अपने सपनों की वजह से, उतनी ही जल्दी वो सपने हमारे पास आते हैं। अभी तक हमारी सारी पास्ट कंडीशनिंग्स चल रही थी, मतलब पूरे टाइम एक्शन रिप्ले में रहते हैं कई बारी हम, है ना। अब धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है, कब हो रहा है, अभी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमारे पास आते भी हैं ऐसे फ्लैशबैक की तरह, वी डोंट एंटरटेन देम एंड यू डोंट हैव टू एंटरटेन देम। इफ इट इज गिविंग यू दैट हिंट ऑफ सैडनेस or whatever it is, so just be a little easy on yourself. Okay, never trouble yourself because of someone else. That is the biggest mistake we can make, जिसमें आपकी कोई गलती, और खूब अपने सेल्फ लव में रहो, दैट आई रियली लव माई सेल्फ, आई लव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, लव टू बाय थिंग्स फॉर योर सेल्फ. Okay, fall madly in love with yourself, and then you will see that life starts taking on in a very different direction. एंड ये सब तो हम हेल्प कर ही रहे हैं आपको ये सब करने में ना, जो अब बुक्स हम पढ़ते जा रहे हैं दूसरी। सो ये वाला आज का चैप्टर है मैग्निफिसेंट आउटकम। ये पास्ट को अनहुक करके जो भी सेगमेंट में आप एंटर कर रहे हो, मतलब जो भी आज के काम है, उसमें सोचना कि वो कितना अच्छे से हो गया। इट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपको घर खरीदना है और आप घर देखने जा रहे हो, आपने प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, property dealer has told you that he's going to take you to 2-3 beautiful new houses, so that you can choose from them. So aap subah subah hi magnificent outcome. Thank you for the magnificent outcome to, like a great trip to see the new beautiful houses. And then you will see that उसी दिन आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा, जो आपने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा और आपके बजट से भी कम आपको वो घर मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही विजुअलाइज करके थैंक यू बोल दिया था कि थैंक यू दैट आई गॉट द हाउस ऑफ माय चॉइस फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू चूजिंग अ ब्यूटिफुल हाउस, माय ड्रीम हाउस. सो दिस इज व्हाट टुडेज प्रैक्टिस इज. तो इसको किसी भी काम करने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं. इट इज लाइक एज स्मॉल एज वट एवर, एज स्मॉल एज जस्ट गोइंग एंड कुकिंग छोले करी. ओके, मतलब आप छोले बनाने जा रहे हो, आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करके जा सकते हो. एंड इट कुड बी एज बिग एज मेकिंग अ ह्यूज बिजनेस डिसीजन ऑफ साइनिंग अप एंड हैविंग अ कोलैब विद समवन बिजनेस वाइज. ओके, विच इज अ ह्यूज डिसीजन. बहुत बड़ा आपको अग्रीमेंट पेपर आज साइन करना है, कोलैब किया आपने किसी के साथ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए. इट कुड बी एज बिग एज दैट.
पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम और थैंक यू करके, विजुलाइज करके, दिल में खूब सारा प्यार भर के, अच्छी सी फीलिंग भर के फिर वो काम करने के लिए जाओ, तो दैट वर्क कैन नेवर गो रॉन्ग इन लाइफ. सो वील जस्ट स्टार्ट रीडिंग. रीना, आप पढ़ रहे हो आज? यस मैम. हाँ जी. Day 21, Magnificent Outcomes. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude,
to create magnificent outcomes. You can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking you might be in trouble. Take the opportunity to make the magic happen. ना दोबारा पढ़ लो एक बार. The problem The with jumping problem to with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thoughts flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like
the magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you are writing about each one after it happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to dash dash dash. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day.
Thank you so much, Reena. Such an extra long chapter this was, only to make us understand that किसी भी चीज में आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, या ये मत सोचो कि काश ऐसा हो जाए. आई रियली विश दैट ये वाला काम मेरा बहुत अच्छे से हो जाए, काश मुझे ये चीज मिल जाए. आई रियली विश दैट, आई होप ये इस तरह से हो जाए. वी डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज हमारे पास वो पावर है कि हम उसका फाइनल डिसीजन को भी डिसाइड कर सकते हैं, और वो हमारा काम है ना. इट इज नॉट लाइक एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की जहां इतने सारे लोग इन्वॉल्व है डिसीजन बनाने में. ये सब हमारा काम है. हमको जाना है, हमें अपनी आउटफिट खरीदनी है, या हमें जाना है, हमारा बैंक अकाउंट का काम है, या जो भी चीज है, जो भी कुछ इशू है रिजॉल्व करवाना, वो हमारा काम है. अगर हमको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है तो हम पहले से ही मैग्निफिसेंट, फिर वो लंबी लंबी लाइनों में वेट करना, फिर पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला, और डर के आ जाएं हम लोग वापस, ऐसा भी तो हो सकता है. सो इसीलिए पहले से ही थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग visit I had with the doctor, or meeting I had with my doctor today. That is it. Okay. And it is as simple as that, because according to law of attraction, whatever we are feeling and whatever we are thinking, we are attracting, because everything is working on the horizon and platform of energy, frequency and vibration. जो हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, वो हमारे पास और आएगी. तो हम अपनी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पे वर्क करके फर्स्टली थैंक यू बोल रहे हैं. दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. अब वो ही रेडिएट हो रही है हमारी लाइफ से, और यूनिवर्स 1 सेकेंड में वो वाली एनर्जी कैच करता है. अब वो ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी ही प्ले होगी हर जगह पे. बार बार वही वाला म्यूजिक चलेगा, क्योंकि डाउनलोडेड म्यूजिक ही वही है, ग्रैटिट्यूड वाला. तो अगर कोई काम करेंगे तो वहां पे भी वही वाली फ्रीक्वेंसी प्ले होगी, कि जहां पे हमें और ज्यादा थैंक यू बोलने का मन करेगा. मतलब ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि लगेगा ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर डूइंग दिस फॉर मी. फिर कुछ और करोगे, फिर उसमें थैंक यू यूनिवर्स, वाह ये तो कमाल हो गया, थैंक यू सो मच. इस तरह से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी जिंदगी में. ठीक है. जैसे जी.के. चेस्टरटन ने शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है. जो जी.के. चेस्टरटन यूके के एक बहुत बड़े राइटर थे. तो उन्होंने ये बताया कि मैं कोई भी काम अपनी जिंदगी में करता हूँ, करने के पहले मैं बहुत सारा थैंक यू, आई से ग्रेस का मतलब थैंक यू होता है. सो आई से ग्रेस बिफोर आई डिप माई पेन इन द इंक. मतलब कुछ लिखने के पहले भी मैं थैंक यू बोलता हूँ. खाना खाने के पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ. किसी प्ले को देखने के लिए, क्योंकि यूके में बहुत प्लेज होते हैं, सो लायन किंग और वो वाला प्ले भी वही होता है ना. सो कोई भी प्ले देखने जाते हैं, वहां पे उसके लिए पहले से थैंक यू करके जाते हैं. फिर जीसस का भी हमने पढ़ा है, जो डे 0 में पढ़ा था, कि वो कोई भी मिरेकल्स करते थे तो उसके पहले वो थैंक यू बोलते थे. सो इज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड बिफोर डूइंग एनी मिरेकल ऑन एनीवन. तो इस तरह से ये पहले थैंक यू बोलने का जो हैबिट है, ये हमारे अंदर आई थिंक प्रीटी मच आ गई है अब, है ना, किसी भी चीज को. कि अभी भी, अब पहले ऐसा होता था कि हम वरी करते थे कैसे होगा, या 11 बजे की फ्लाइट है तो बहुत ही ऑफिस ट्रैफिक मिलेगा, इसमें तो बहुत ही लेट हो जाते हैं. हमारा ये थॉट प्रोसेस हुआ करता था. अभी भी कभी कभी होता है, बिकॉज जो भी हमारे पास की कंडीशनिंग्स हैं, जहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, बार बार वो एकदम से प्रोजेक्ट हो जाते हैं हमारे दिमाग में, है ना. और उस बेसिस पे हम कभी कभी डिसीजन बनाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट, just deciding that you are reaching airport at 10 o'clock for your whatever 12 o'clock flight or 11:30 flight, या जो भी आपको जो भी टाइम डिसाइड करना है, पहले से ही थैंक यू for the magnificent outcome to an amazing ride till the airport where I reached way before time. Thank you so much, and my check-in and everything was so easy, so effortless. Thank you. ठीक है. ये इस तरह से प्रैक्टिस करना, और इस तरह से किसी भी सेगमेंट में, एक्चुअली सेगमेंट वर्ड बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यू नो दैट आई फॉलो अब्राहम हिक्स अ लॉट, है ना, और मैंने उनका इतना काम पढ़ा हुआ है. तो जो मैग्निफिसेंट आउटकम हम मैजिक बुक में बोलते हैं, उसी को सेगमेंट इंटेंडिंग अब्राहम हिक्स बोलते हैं. इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो डिफरेंस. 19-20 का भी फर्क नहीं है दोनों में.
उनमें वो लोग सेगमेंट इंटेंडिंग बोलते हैं कि आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हो. तो इंटेंशन, इंटेंडिंग मतलब सेट एन इंटेंशन फॉर दैट सेगमेंट. सपोज अगर इफ आई एम गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर अ लंच, okay, or a bunch of friends for my lunch, so that is the new segment that I'm entering into. दिन भर का वो एक सेगमेंट है. एक दिन में खूब सारे सेगमेंट्स होते हैं. सुबह सुबह उठ के मे बी ये हम सबको स्टडी करना, फिर सेकंड होता है सेगमेंट वर्कआउट करना, थर्ड सेगमेंट होगा ऑफिस ड्राइव करके जाना, उसके नेक्स्ट सेगमेंट होगा ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो करना, और हर दिन के एक अलग काम होते हैं. उसके बाद ऑफिस लंच टाइम होगा, उसके बाद ड्राइव बैक होगा इवनिंग में, हो सकता है ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उसके बाद शाम को हो सकता है गेस्ट घर आ रहे हो या कुछ ऐसा हो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट आज के दिन के जैसे सेगमेंट्स है, एज एन एग्जाम्पल, है ना, अलग अलग सेगमेंट्स है. तो इनमें पहले इंटेंशन डाल दो कि ये मतलब ये सेगमेंट एक्सरसाइज मजा आ जाएगा, वाओ आज एक्सरसाइज करके, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू एन अमेजिंग एक्सरसाइज सेशन, मजा आ गया, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है. तो अभी तो करना है, बट हम ऐसे करते हैं एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, वो हो गया. फिर उसके बाद आप ऑफिस जा रहे हो सपोज, सो उसमें थैंक यू फॉर द मोस्ट कंफर्टेबल जॉयफुल फन राइड आई हैड टू वर्क, दैट वे. सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सच एन अमेजिंग राइड, मजा आ गया, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो इसमें देखो कितने इमोशंस हैं अच्छे वाले, और इस तरह से बोला है एज इफ वो राइड ऑलरेडी हो चुकी है ना. वेर आई रीच्ड ऑफिस बिफोर टाइम, अमेजिंग, मजा आ गया, थैंक यू सो मच, दैट वे. उसके बाद ऑफिस में कोई स्पेसिफिक मीटिंग है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, लोग क्या बोलेंगे, यू नो, आई होप आई मेक अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन आई एम देयर इन द मीटिंग और वट एवर इट इज, है ना. अभी अगर ये था तो पहले से ही थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग मीटिंग. आई मीन देयर वाज सो मच ऑफ जॉय, लाफ्टर, cheer, and I was so much appreciated for my work. Thank you universe for doing that to me. Thank you for giving that. ठीक है, इस तरह से. So पहले से ही डिसाइड करके अपने heightened emotions में उसको थैंक यू बोल दो मैग्निफिसेंट आउटकम करके. दैट इज व्हाट इट इज. उसी को सेगमेंट इंटेंडिंग भी बोलते हैं. इंटेंशंस डालना अपने सेगमेंट में, जैसे लंच ईटिंग के सेगमेंट में इंटेंशन डालना, वो डालना. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ बिकम्स, यू नो. जैसे हम जब गोवा गए थे बहुत पहले, कोविड के टाइम से सब कुछ बंद था, गोवा बंद था, उसी दिन खुल रहा था जिस दिन हम लैंड किए थे. सो हम तो मैं सुनीता, हमारी निकिता, हमारी एक और थर्ड फ्रेंड है, तो हम तीनों गए थे. एंड बस सिर्फ एक ही फ्लाइट चलती थी उस टाइम, मतलब वो भी आई थिंक 2 ही दिन पहले शुरू हुई थी, एंड सब कुछ वहां बंद था. तो हम सेगमेंट इंटेंडिंग हमने फ्लाइट की, वो द मोस्ट अमेजिंग, क्योंकि हम तीनों ही इस जर्नी में थे. सो मोस्ट अमेजिंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस where the air hostess had to ask us to stop laughing because we were making so much of noise. Can you imagine? हमने ये segment intending की थी, ये हमारा magnificent outcome ये था कि हम हंस के गिर रहे हैं, और एयर होस्टेस को आके हमको बोलना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहो, आप लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हो. एंड यू विल नॉट बिलीव, जब वो एयर होस्टेस आई और उन्होंने बोला, सो आई वाज सिटिंग ऑन द aisle seat, माय फ्रेंड वाज सिटिंग, सुनीता वाज सिटिंग इन द मिडल एंड निकिता वाज सिटिंग ऑन द विंडो सीट. तो उन तीनों सीट पे हम बैठे हुए थे. लिटरली जब एयर होस्टेस आई और हमको बोलती है कि यू कैन लाफ अ लिटिल सॉफ्टर प्लीज एंड दिस, एंड हम तीनों को इतनी जोर से हंसी आई क्योंकि वो हमने इंटेंशन क्रिएट करा हुआ था, वो डेलिब्रेट था. मतलब वी हैड क्रिएटेड दैट मोमेंट ऑलरेडी बाय सेइंग थैंक यू फॉर इट. So, you know, it can be as crazy as this, but you can decide everything in your life. You can decide the outcome the way you want it to be. So that gives us so much of a power, isn't it? So this is what we have to do today. आज की practice में हमको 3 ऐसे events लेने हैं जो आज होने वाले हैं, today. ठीक है, और उनको हमको लिखना ऐसे है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश 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 डैश, जो भी है, टू एन अमेजिंग फोन कॉल विथ माय फ्रेंड विच वाज सो ब्यूटिफुल एंड कंक्लूसिव. ओके, और थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू एन अमेजिंग लंच टाइम विथ माय ऑफिस कोलीग्स विच वी thoroughly enjoyed. Thank you for the magnificent outcome
to the most amazing shopping experience I had today, where I got the, say dresses or shoes, whatever, of my choice, which exceeded my expectations. अब आपने सुबह ये लिख दिया है और आपने इमेजिन भी कर लिया और उसके लिए थैंक यू भी बोल दिया, अब वो डन एंड डस्टेड है यूनिवर्स की किटी में, ठीक है. नाउ दैट हैज टू कम टू योर लाइफ फॉर श्योर. And this is how it works. This is called magnificent outcome. So magnificent outcome किसी भी चीज के लिए जिसमें आपको वरी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या आपको लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, उसके लिए let's start using it more and more and more. And more you use it, more and more आपका आगे का अच्छा होता जाएगा, because अब आपकी लाइफ स्मूदन हो जाएगी और उसमें अनसर्टेनिटीज, डाउट, वरी, फियर, ये सब नहीं रहेगा, है ना. बिकॉज दिस मोमेंट वी आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट मोमेंट. अगर दिस मोमेंट में आपका डाउट है तो आगे के 10 सारे मोमेंट्स में डाउट रहेंगे, बिकॉज वट एवर योर एनर्जीज आर राइट नाउ इज वॉट यूर क्रिएटिंग फॉर द नेक्स्ट मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट. So this is the reason keeping us in a high vibration, keeping us in a high frequency and radiating a good positive energy of certainty and clarity is very, very important. Now, everything will happen according to your certainty and clarity, because now your being is becoming like that. So we all are being. I am, just jo humse koi nahi le sakta, right? So that I am, the being of me now is becoming like a high vibration person, more clear, more convinced, happier, in a high frequency. And now life around is going to becoming like that, and we will be in our bliss most of the time, and amazing unfoldings are going to happen before your very eyes, जो पता नहीं है, that have been in waiting, because हमारी frequency अभी तक आई नहीं थी, तो यूनिवर्स ने हमको वो अचंभित करने वाली चीजें अभी तक हम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच ही नहीं रहे थे कि हमारे पास आए. वो मेंट थी हमारे लिए बट नहीं खुल रही थी हमारे सामने. सो अब एविडेंसेस एंड अनफोल्डिंग्स आने लग जाएंगे जब कॉन्स्टेंटली हम कोशिश करते हैं अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में रहने की और अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखने के कारण, where we are not giving our power away to someone else. No one can now make us angry. No one can now get us irritated to that extent anymore. Okay, because we know our power. We know that no, I can kind of just control this. So this is how beautiful life is, and this is the only way of living a life, for the best. And see, this is about the chapter. ये हो गया, ये expected चीजें हमको आज 3 करनी है. expected चीजें 3 है ना, मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए कि जो आपको पता है कि आज आपके दिन क्या क्या लाइंड अप है, वो 3 एक्सपेक्टेड हो गए. नाउ अनएक्सपेक्टेड, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम से फोन आया आपके स्कूल, आपके बच्चे के स्कूल से, दैट यू हैव टू कम टू स्कूल, और द प्रिंसिपल्स कॉलिंग और द क्लास टीचर्स कॉलिंग, और if you're in the office, your boss calls on you and says that why don't you meet me in my room. So अनएक्सपेक्टेड भी ऐसा होता है. तो इसमें लिखा हुआ है रॉन्डा बर्न ने कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है तो 2 मिनट करने के पहले आंख बंद करके थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद माय बॉस इन द मीटिंग. सपोज अर्जेंट मीटिंग आ गई है या आपको बच्चे के स्कूल जाना पड़ रहा है, सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू हो सब. फिर अपने आप वो टर्न अराउंड हो जाएगा. फिर वो आपके बच्चे के स्कूल में आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि आपका बच्चा हैज बीन चोजन टू गो फॉर सम हॉकी टूर्नामेंट और फुटबॉल टूर्नामेंट और समथिंग, इसलिए बुलाया था. और क्योंकि उसको एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, सो पेरेंट्स का रिटन कंसेंट चाहिए होगा. और हमारा दिमाग तो वैसे भी नेगेटिव चीजों में भागने में बहुत एक्सपर्ट है ना, तो वो फट से जाएगा, क्यों स्कूल बुलाया है, ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, ऐसे तो नहीं हो गया, ऐसे हो जाता है ना. तो इसीलिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के फिर जाना, हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया करो, अपने आप जिंदगी अच्छी हो जाएगी. और सबसे अच्छी चीज इससे ये होती है कि एक तो ना कंट्रोल में रहते हैं, हमको अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है. That is a very big thing to have. Otherwise, mind is always running here and there. ऐसे फायरिंग होती है ना न्यूरॉन्स की, स्पेशली नेगेटिव चीजों में, जिनमें फीलिंग्स एंड इमोशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं. नेगेटिव चीजों में फीलिंग्स एंड इमोशंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा होती है. तो अब उसको हम साइड ट्रैक कर रहे हैं. अब हम अपनी पावर को गेन करना शुरू कर रहे हैं. हम क्रिएट कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें भी हो रही है उनको भी हम क्रिएट करते हैं. और जब क्रिएट करते हैं उसके बाद भी थैंक यू बोलना मत भूलना.
तो उसके बाद भी थैंक यू बोलना मत भूलना, क्योंकि जब वो हो जाएगा ना उसके बाद उस चीज के लिए थैंक यू बोल देना, थैंक यू सो मच फॉर दिस हैपनिंग एग्जैक्टली, बेटर देन. सो एवरीथिंग, लाइफ ऑलवेज एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस. That is what your self-talk has to be like. So yesterday we studied a lot about self-talk because the chapter was on that in the Hero book. Secondly, अपने आप को non-stop बोलते रहो that everything is always working out for me. That is again something you have to rant to yourself all the time. Everything is always working out for me. All is well. Everything, life is so beautiful and perfect. So now these kind of things will show you evidence. And this is the evidence that the world's looking for. Okay, so then that struggle and suffering and whatever, all that is going to get dissipated from under the door. You'll not even realize how it's all slipped off. So this is how we need to kind of do it. So आज के assignments जो है, of course, like सबसे पहले it is count my blessings that we have already done. हम 10 gratitude लिखते हैं of the things that we have in our life right now. We reread them और एक एक के बाद we say thank you, thank you, thank you. और आज सुबह सुबह की practice है. At the beginning of the day, choose 3 things या situation जो आज आपको मायने रखती हैं, that are important to you. ठीक है, लिस्ट करो, लिखने की प्रैक्टिस होगी ये वाली. ठीक है, लिस्ट करनी है उन तीनों चीजों को. और लैंग्वेज विल बी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग एक्सरसाइज सेशन आई हैड टुडे दैट लेफ्ट मी फीलिंग सो एनर्जाइज्ड एंड सो गुड. थैंक यू, दैट वे. फिर सेकेंड वाला आप चूज करो. सेकेंड आपको कुछ और करना है, मे बी ग्रोसरी शॉपिंग करनी जानी है. So thank you for the magnificent outcome to the most amazing grocery shopping I had today. Thank you so much. और third जो भी आपको लिखना है, maybe you want to go purchase a dress for yourself, or maybe you want to go for the dentist appointment, or you want to go meet your friends out for lunch, or whatever it is. कोई बैंक का काम करना है, कुछ और करना है. हो सकता है आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आ रहा है कुछ फिक्स करने के लिए, हो सकता है आपका नया रेफ्रिजरेटर आ रहा हो, जो भी है. So उस चीज के लिए. So language will be this only. Thank you for the magnificent outcome too, and use as big adjectives as you want that uplifts your emotions. And then as you go through the day, 3 unexpected जो है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी भी चीजें कई बार हो जाती है कि एकदम से आपकी फ्रेंड बोलती है मैं 1 सेकेंड आप घर पे हो, मैं आ रही हूँ घर पे. ठीक है, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट टाइम दैट आई स्पेंट विद माय फ्रेंड. ऐसे करना होगा, वो मन में बोल के करना है, वो लिख के नहीं करना है. 3 एक्सपेक्टेड लिखना है, 3 अनएक्सपेक्टेड बस 2 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए आंख बंद करके बस आप थैंक यू बोल दो. दैट्स इट. ठीक है, दिस एंड रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस. वी होल्ड द रॉक इन अ हैंड, क्लोज अ फिस्ट and scan the day, entire day. ये हुआ, okay, ये हुआ, thank you so much, wow, then that happened, and this. उसमें से best चीज pick करो, उसके लिए thank you बोल के सो जाओ. So this is the practice. Now we go to the hero book, जिसमें एक बहुत ही beautiful topic है subconscious mind, जो हम आज से पढ़ रहे हैं. So let's see how all these people have to comment on subconscious mind, all these 12 success stories जो हैं हमारी. So yes, let's read this. This is the book The Hero by again Rhonda Byrne, the same author. And Pushpinder ji, आप पढ़ रहे हैं? जी जी जी. Your subconscious mind. As you think thoughts that you can achieve your dream, you will change the program in your subconscious mind. Your subconscious mind is like a computer, and it has many different programs that you have loaded into it, either with your thoughts or by listening to or accepting other people's thought about you. And you have been doing this throughout your life.
Yeah, so this is what subconscious mind is like the tetrabyte जिसमें पता नहीं कितने जन्मों की इंफॉर्मेशन है. लोगों ने कुछ बोला कि नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, लड़कियों को इसी तरह रहना चाहिए, उनको इसी तरह कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, और एनी इंफॉर्मेशन फॉर दैट मैटर, that this is unsafe, this is safe, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये appropriate है लाइफ में, ये appropriate नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. थॉट्स एंड फीलिंग्स ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस डाउनलोड कर रखे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में. सो वी नो प्रीटी मच अबाउट सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी है. So, but then it will be nice listening to the success stories of all these big people. हाँ जी. सब्जी में ना पहले ये वाला तेल डालना. सब्जी लो, सब्जी हम बता दे रहे कितना से काटना है. रचना थोड़ा ही रचना काटना, ज्यादा नहीं काटना. हाँ जी. Michael Acton Smith. If you don't believe in yourself, if you don't believe you can achieve something, then no one else is going to. All the programs in your subconscious mind have been put there by thought, and it's thought and thought alone that will create a new program and override the old one. When you first start to think thoughts that you can do anything, you will feel the rejection from the firewall of your subconscious mind, which will tell you that those thoughts aren't true. But as you keep planting the thought that you can do it, eventually those thoughts will become a belief and you will have changed the program. Yeah, so this is what Michael Acton Smith is also saying. So मैं आपको हमेशा एक word बताती हूँ ना, repetition is recreation. So if you want to recreate, so होता क्या है कि subconscious mind में suppose अभी तक कोई thought था that I am not able to travel alone, है ना. मान लो ये वाला thought था that I can't do it alone, I have never traveled alone and I cannot travel alone. और ये सेल्फ लिमिटेड थॉट है. ऑब्वियसली हमको पता है दैट ऐसा कुछ होता नहीं है. पूरी दुनिया में बहुत सारी पीपल लाइक मी हु हैव टू ट्रैवल अलोन फॉर वर्क बिकॉज काम ही ऐसा है. बट मेरे लिए भी तो पहली बार था ना कभी. आई मीन लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल्ड अलोन इट वाज विद अ लॉट ऑफ एंजाइटी. बट ये नहीं सोचा था कि नो आई विल नॉट ट्रैवल. ये था दैट यस आई एम गोइंग टू बीट माय एंजाइटी फॉर श्योर. एंड यू नो फर्स्ट टाइम जितना लेट होता है उतना ही और डिफिकल्ट होता जाता है, एंड जितना अर्ली ऑन एज में होता है उतना आसान होता है. सो इस तरह से हमारे माइंड में सेल्फ लिमिटेशंस के थॉट्स ऑलरेडी प्लांटेड है, जो इनसिक्योरिटी हो सकता है अबाउट रिलेशनशिप्स, और इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी डाउटिंग एवरीवन पीपल, है ना, लोगों को शक की नजरों से देखना. इट कुड बी हैविंग इनसिक्योरिटी अबाउट मनी और व्हाटएवर, यू नो. सो इस तरह से जैसे जैसे ऐसे हो, मतलब ये वाले जो थॉट्स है, तो अब आप हमको क्या करना है, जैसे माइकल एक्टन स्मिथ ने बोला कि आप जैसे ही नया थॉट प्लांट करते हो दैट ओ इट इज सो इजी फॉर मी टू ट्रैवल अलोन, यू नो, एंड आई एंजॉय माई ट्रैवल्स अलोन. अब नए थॉट आपने डाला, इनिशियल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है. हमेशा शुरू में रेजिस्टेंस आएगा बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इस नए आइडिया को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर पुराना 2 जन्मों का एक थॉट प्लांटेड है कि अकेले ट्रैवल करने से मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है. अब ये नया थॉट नहीं एक्सेप्ट होगा बहुत आराम से, और क्योंकि ये स्लाइट डाउट के साथ एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो आप एनवायरमेंट में वो सारी सिचुएशंस देखोगे कि जहां पे आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो बट इट इज नॉट वर्किंग आउट. कहीं से कुछ रुकावट आ रही है, फ्लाइट वो कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो जाती है, तो वो आउटवर्ड रियलिटी में उसका रिएक्शन आता है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है माइकल एक्टन स्मिथ ने कि आपको रेपिटेशन करने की वजह से अपने आप वो जो पुराना थॉट था आपका सेल्फ लिमिटेशन वाला, अब वो आपका हट के नया थॉट प्लांट हो गया है, और इसको रिपीट कर करके धीरे धीरे ये बिलीफ बन जाएगा. तो बिलीफ होता क्या है, आर द थॉट्स दैट वी कीप रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन. उसी को तो बिलीफ बोलते हैं ना. हैबिट क्या होती है, कोई भी चीज आप लगातार करते हो वो हैबिट बन जाती है,
ठीक है, तो अब लगातार बोलते रहो, I enjoy all my alone travels. I enjoy my travels. I'm always safe. People are like really amazing. I keep using this word for everyone कि लोग बहुत अच्छे होते, तो एकदम से किसी से सेंटेंस आता है, नहीं लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, इस तरह से. But I keep telling this that people are amazing and I meet some amazing people. मतलब कभी भी कोई हेल्प चाहिए, someone from somewhere comes, और कभी भी इस तरह की चीज अपने आप हो जाती है, तो आपकी क्या इंटरनल बिलीफ और सेल्फ टॉक और चैटर चल रहा है अंदर, दैट डिसाइड्स, बिकॉज इट इज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं नॉन स्टॉप. और अगर वो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसी को रिआइटरेट आप करते रहो बार 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 बार, एंड स्लोली बिकॉज ऑफ रिपीटेशन दैट विल बिकम अ बिलीफ. और अब वही, क्योंकि हमारी किस्मत वही है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है. दिस एग्जैक्टली व्हाट वी सी आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन, द काइंड ऑफ पीपल वी मीट, द काइंड ऑफ इवेंट्स दैट वी गो टू, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी हैव, एवरीथिंग इज equal to, exactly proportional to the information जो subconscious mind में जो data feed है, ठीक है. और वो data feed करना और उसको unfeed करके new data download करना, ये हमारे हाथ में होता है. हम ही तो करते हैं अपने thoughts, feelings और repetition के कारण. तो हम क्यों नहीं अपना वो data ही change कर दें जो feeded है, जो movies downloaded है उनको अब हम ये feed करते हैं. Everything is always working out for me. I can do anything that I want to, no matter how difficult it might seem. I'm very creative. I'm always appreciated for my work. Okay. All is always working out for me for the highest good. I am super happy and healthy. I can exercise as much as I want to. I have an amazing time management. ओके, सो दीज आर द काइंड, और जो भी मतलब हम सबका यूनिक लाइफ होती है, यूनिक पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ है, लाइक आई एंजॉय ऑल माय रिलेशनशिप. सपोज आपको रिलेशनशिप्स में अपना वो करना है और आपके बहुत सारे में भी अगर दोस्त नहीं है अभी और यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देन यू कैन. आई एम मेकिंग सम अमेजिंग मीनिंगफुल फ्रेंड्स इन माय लाइफ who are adding so much of joy, cheer and value. Okay, so they're adding so much of joy, cheer and value to my life. So such nice, amazing friends. I love my life. I'm looking and feeling the best these days. I'm always full of compliments for others, and others are constantly giving me compliments. So whatever, like time management पे work करना है तो आप constant अपने आप को ये बोलते रहो that I have time for anything and everything with ease. Okay, so this is how like our constant healthy, strong, talking super to strong. us. Healthy. So our constant talking to us is going to make us form a firm belief. Okay, that means इसमें लिखा हुआ है ना माइकल एक्टन स्मिथ में, that as you keep planting the thought that you can do it, eventually these thoughts will become a belief and you will have changed the program. तो जो प्रोग्रामिंग आपके माइंड के कंप्यूटर की की हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग हमने अपने रेपिटेशन के कारण चेंज कर दी है. एंड नाउ वॉच आउट, वेट फॉर द बेस्ट एंड यू विल सी हाउ लाइफ like presents itself before you. हाँ जी बेटी जी. Lane Beachley. Anyone can acquire self-belief if they choose to do so. It's surprising that after many years, even a lifetime of not believing in yourself, it only takes a short time of concerted effort to start believing in yourself. Okay, yeah. So it is like अपने आप की बिलीफ है, अपने बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली अपने आप से प्यार नहीं होता. हमारी बहुत लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं. हमने हमेशा अपने आप को शीशे में भी देख के बोला है मेरे हिप्स बिग हैं, मेरा ये है, मेरे ऐसे हैं, मेरे बाल कम हो रहे हैं, मेरा ये, मतलब हर तरीके से इंटरनल जो हमारे ट्रेट्स हैं उनके बारे में भी हमने बहुत अच्छा नहीं सोचा है. आई मीन लाइक I don't like when, girls say I'm so emotional and I'm so emotional. I mean, obviously the connotation is negative. Okay, I'm emotional, matlab I cry easily. That's what it means. That I get affected by others. I'm so emotional. You don't have to say that. I mean, like, please change your auto-suggestion or self-talk and say that I'm a very strong person. I mean, I'm capable of making anyone happy.
So that is the kind of talk we need to do. So it says that Len Bishley says anyone can acquire self-belief if they choose to do it. So human beings ही एक वो होते हैं beings, you know, living forms जिनको ability to choose होता है. So इसीलिए mentally choose the things that you most want to see. That's what it says, that it needs a concerted effort to start believing in yourself that yes, I can do anything. Yeah. The most powerful time to reprogram the subconscious mind is when you are falling asleep at night. When you are in that very sleepy state of being half asleep and half awake, plant the thought that you can do anything and you can achieve anything you set your mind to. Your aim is to make that believing in yourself thought your last thought before you fall asleep, because the very last thought you think as you are falling asleep goes straight past the firewall and into your subconscious mind. And when that thought goes past the firewall, the subconscious mind must accept it as true. Once your subconscious mind has the new program of believing, it must carry out that program and prove your belief in yourself true. You will suddenly find new people in your life who believe in you, or new support from people already in your life, and you will feel inspired to take particular steps or actions that prove your own abilities and increase your self-belief. Whatever you hold in your subconscious mind is what happens in your life. This is because any new program in your subconscious mind is immediately transmitted to the universal mind. And once the universe has the instructions, it will work with you to make sure you achieve what you believe. Perhaps now you will understand why it has been said that whatever the mind of man can conceive and believe, he can achieve. Yeah, thank you so much, Bitti ji. This is all we'll be able to read today. Thank you, और ma'am. ये बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग है हमारे लिए. इसमें फर्स्ट सबसे ऊपर से ऊपर वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है दैट जब आप सो रहे होते हो रात को, तो सोने के जस्ट पहले का टाइम, उसको हम वैसे भी सीडिंग टाइम बोलते हैं. वो ना माइंड सीडिंग टाइम होता है. उसमें आप सीड प्लांट कर रहे हो कोई भी. तो जो आपके थॉट्स होते हैं जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, जब आप नींद में नहीं होते हो बट यू आर नॉट अवेक एज वेल, आई मीन यू आर नॉट अवेक, यू आर प्रीटी स्लीपी. So you are in your alpha state of mind is what we call it scientifically. So it's beta, alpha, theta. ठीक है, इस तरह से माइंड स्टेट्स होते हैं. ये ब्रेन वेव्स के फ्रीक्वेंसीज होती हैं. सो अल्फा ब्रेन वेव इज द टाइम जब कोई भी सीड प्लांट करोगे तो वो जाके स्प्राउट होना शुरू हो जाता है और वो पूरा वो आपका रियलिटी बन जाता है. सो जस्ट बिफोर वी स्लीप इन द नाइट इज द टाइम जब आप वो सीड प्लांट कर सकते हो. सीड ऑफ थॉट, जो भी चीज है, दैट it just could be that wealth and success is mine now, right? Suppose so wealth and success is mine now. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सिखाया था कि आप सिर्फ वेल्थ भी बोल सकते हो, मतलब कीवर्ड, आपको पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन भी अगर नहीं करोगे तो चलेगा. सो वेल्थ एंड सक्सेस, सिर्फ ये दोनों भी कर सकते हो. ठीक है. एंड परफेक्ट हेल्थ, आई एम एंजॉइंग अ परफेक्ट हेल्थ. सपोज आपने ये वाला सीड प्लांट किया है. अब जब आप सो जाओगे जैसे ही, दिस विल स्टार्ट स्प्राउटिंग, यू नो, ये वाला जो सीड आपने डाला है, और सबकॉन्शियस माइंड में ये डीप पेनिट्रेशन कर लेता है. So hence we do the magic rock practice in the night because we are only thinking about the good things. Normally क्या होता था पहले, that सोते वक्त हमको लगता था कि आज का मेरा दिन इतना वो हुआ, ये भी था, ऐसे उसने मुझे ये बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, and you're hyper emotional about certain things. Then you feel that इतना काम मुझे घर में करना पड़ता है, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, अब कल पता नहीं इतना सारा वो है, मुझे ऑफिस का भी काम करना है, मुझे ये भी करना है, 4 चीजें हैं, वो 2 चीजें तो पेंडिंग ही पड़ी है, ओ शिट उसको आज मुझे फोन कॉल करना था, मैंने किया नहीं. दिस इज हु वी
are when we have been going to sleep all our lives. Okay, so now this pattern's changing. Now we do the magic rock practice. So that practice has deliberately become part of our lives now, so that our mind does not go towards anything negative anymore. And we are only saying, thank you, wow, thank you, acha fir ye hua, thank you. So this is what we have learned, and we have reoriented our structure now. And, kind of we are using that alpha state of mind for thank yous, for gratitude frequency. अब हम ऐसे कर रहे हैं, तो इन्होंने भी यही बोला है इस किताब में, दैट सोने के जस्ट पहले इज द टाइम जब आपका माइंड सीडिंग टाइम होता है, उस वक्त सीड डाल दो आप ऑफ वॉट एवर इट इज दैट यू वांट, जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है उसका ऑपोजिट, दैट आई कैन डू एनीथिंग एंड थैंक यू दैट money is constantly raining in my life. Suppose if you want to do that, or if you just want to keep telling yourself, I am a money magnet, just with that thought you want to go to sleep, you can go ahead and do it. You want to do it, suppose आप अपना health के साथ या body weight के साथ struggle कर रहे हो, आप बोले हो thank you for my perfect body weight of X kilos, so ये कह के आप सो जाओ. So whatever it is that you instruct your subconscious mind के पास सही और गलत parameters नहीं होते, that this is true and this is false. It believes in autosuggestions. Even if it is fake, it does not have वो conscious mind का काम होता है कि नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो, you are not this ideal body weight. वो conscious mind का काम होता है. Subconscious mind does not see that this is right, this is wrong. So if you're saying that I am a money magnet, it's raining money on me, or I'm easily receiving rupees so and so every month with ease, with joy. So it starts believing when you are repeating it. So when there is a repetition, subconscious mind में वो जाके settle हो जाता है, and subconscious mind actually हमारी किस्मत होती है. फिर उसके बाद वाले paragraph में लिखा है कि that अब according to the seed that you had planted, wait, I'll just take you through that paragraph. उसमें लिखा हुआ है जो आपने seed plant किया है उस हिसाब से universe आपको yield करेगा. अब अब वो यूनिवर्सल माइंड में, मतलब वो ब्रह्मांड में चली गया वो इंफॉर्मेशन जो आपने सोने के पहले अपने आप को बोला था, ऑटो सजेस्ट किया था, और आप रोज कर रहे हो, उसको बार बार बोलते जा रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो और उसी के बारे में और अच्छी फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो. सबकॉन्शियस माइंड अब उसका ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा, और जिसके कारण आपको पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स ऐसे मिलने लग जाएंगे जो यूनिवर्स के भेजे वाले लोग हैं. दे विल असिस्ट यू इन अकम्प्लिशिंग दैट गोल, द सीड ऑफ दैट गोल दैट यू हैड प्लांटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपने सीड प्लांट किया था, है ना. सो इसमें लिखा हुआ, यू विल सडनली फाइंड न्यू पीपल इन योर लाइफ हु बिलीव इन यू, न्यू सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम पीपल. आपको अपने अंदर से इंस्पिरेशन हंचेस आएंगे कि मैं ये काम कर लेती हूँ, और उस तरह से आपको लगेगा वाह ये तो कमाल है, मतलब ये कैसे हो रहा है, ये तो आपने रोज रात को बस अपने आप को बोला था, है ना, इस तरह से. तो इसीलिए फिर लिखा हुआ है, वॉट एवर यू होल्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड इज वॉट विल हैपन इन योर लाइफ. इट इज अ सिंपल फैक्ट. Okay, so use the subconscious mind more and more. हमको actually subconscious mind की abilities इतनी पता ही नहीं होती, because जब एल्बर्ट आइंस्टीन का भी जो ब्रेन स्कैन किया था उनकी डेथ के बाद, तो वो भी सिर्फ 6% ही यूज कर रहे थे. मतलब तो सोचो कि कितनी ज्यादा पावर्स हमारे अंदर हैं जो छुपी हुई हैं, शक्तियां हमको मालूम नहीं है कि किस तरह से, बट हम सब ने किया है. देखो मैंने तो अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया है, जो मेरा था, मतलब उस वक्त ऑफ कोर्स वो एक्सपैंड हो जाता है ना, जैसे ही आप उस लेवल ऑफ उस फ्यू लैक्स अगर आपने सोचा था कि आप वो पहुंचते हो, तो अब आप उसको एक्सपैंड करते हो, आपका नेक्स्ट गोल तैयार रहता है. जब आपको, जो मुझे कार चाहिए थी, जब मैंने ये वाली कार खरीदी, तो वो अब नेक्स्ट कार का गोल दूसरा आ जाएगा. तो जब आपके पास उतना पैसा आ जाता है, जब आपने सारे सुख आराम इंजॉय कर लिए होते हैं, उसके बाद अब आप लोगों के लिए भी करना शुरू कर देते हो. तो एक्सपेंशन तो कांस्टेंट प्रोसेस होता है ह्यूमन लाइफ का, लेकिन खूब इंजॉय करो अपनी लाइफ, खूब खुशियां बटोरो, लोगों की सेवा करो अपने तरीके से, जैसे भी कर सकते हो. अच्छा घर, अच्छे अच्छे घर खरीदो, ऐश करो, मजे करो, सारी ये लग्जरीज, कंफर्ट्स, अच्छी हेल्थ एंजॉय करो. लाइक अपनी हेल्थ वैसे ही कर लो जैसे अभी तक ऐसे लग रहा था कि दिस इज माई ड्रीम हेल्थ and this is what I want to do. Achieve that in your life, and it is so easy to do it. Or whatever it is, you just want to become a global icon, go ahead and do that.
and universe loves growth and success stories. Okay, so it will not leave any stone unturned in having that answered for you, and that goes without saying. So this is how it is. So इसमें यही जो लिखा हुआ है, that universe will work to make sure, it will work to make sure you achieve what you believe. And so hence repetition is very important. So keep repeating those things, that everything is always working out for me. I'm enjoying the best of my health. My business is thriving and flourishing. I am so capable. I am a genius. You know, I'm very witty. I have like an amazing sense of humor. It's raining money on me. My income's constantly increasing. I love everyone and everyone loves me, just the way they are, just the way I am. And I'm a powerful being. I have full control on my thoughts and emotions. Thank you, universe, for always answering all my prayers. I'm fit, healthy, you know, like always flowing with energy and stamina. Thank you. I have an amazing immunity and I'm always healthy. No matter what I eat, you know, I have a perfect body weight and I feel so good about myself. I have an excellent communication skills and I communicate the right things at the right time. Well, whatever it is that you want to, I am, you know, my circle of friendship is constantly expanding, and every relationship in my life is so happy, meaningful, and so joyful. Well, you know, if you want to say that my children are thriving and flourishing and they are so appreciated by they're making the family, grandparents, parents, and their school teachers so proud, you know, by their work, by their conduct. My children are so responsible, that they make just the right decisions of what's right, what's wrong. And I love to see them grow and thrive. Well, this is the kind of talk. So to each, you know, whatever hits you is for you, like you, because I've shared a couple of them that I keep hearing from others, that this is how they want to become. So this is how life is, and this is how we can just mold it, so that the mold is what you need to create. That mold is already in your life. So put your thoughts and feelings and emotions into that mold, and then now see what magic happens. And then, of course, one thing that you have to keep telling to yourself is that my life is full of magics and miracles, and life is so beautiful, and I so damn love it. Okay, this has to be your self-talk instead of cursing situations and people around. So yeah, that is what I have from my desk today. Thank you so much. And yeah. Anyone wants to share or add anything? Priya, Poonam, Shamji, Vijayji, Mohitji, any of you? Can I ask something? विजय जी Yeah, का इतना yeah. अच्छा लगा ना, whenever someone is reading ना, विजय जी reads on his own self, like अपने आप ही पढ़ते रहते हैं वो each and every line. I noticed it a couple of Vijay times. ji. विजय जी अपने आप ही पढ़ते रहते हैं, like मुझे लगता है लाउड ही पढ़ते होंगे, like while हाँ, नहीं, वो saying. वैसे पढ़ने से ही फिर समझ आता है। वो वैसे पढ़ो ना, मतलब एक जना तो आउट लाउड पढ़ रहा है और बाकी सब अपना स्क्रीन पे अगर देख के अगर हम पढ़ते रहें तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी बहुत परफेक्ट हो जाती है। तभी तो And विजय he जी reads की out loud, I लाइफ think. Like I also read, but विजय सर ना आप जोर से पढ़ते हो ना? I remain focused that way. You remain focused always, yeah. Yeah, That's yeah. what I that love, does yeah. make a difference. And today's Yes, practice is Sunaina. all-time favorite, ma'am, obviously. हाँ, है ना? And most overused practice, which is so beautiful. Yeah, always works out. Yeah. The parallel reality, as went in on Mr. Arvind. Yeah. So Yeah. parallel reality is already created. It's just that you have to bring it in our life. Yeah. What you want to And become. yeah. Yeah. हाँ जी, सुनैना। दीप्ति, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि जो भी हमारी लाइफ में करंट रियलिटी चल रही होती है, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड इट. सो माय क्वेश्चन इज, जैसे मेरे साथ लाइक ऐसा होता है ना कि सम टाइम आई एम इंडिया, लाइक 1.5 year आई एम इन इंडिया, देन अगेन आई एम बैक टू कनाडा, फिर देन फॉर एनी रीजन आई एम देन अगेन कमिंग बैक टू इंडिया. सो मेरे को आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि why this is happening, because
आई एम नॉट थिंकिंग द वे इट इज हैपनिंग कि आई वांट कि मैं जहां भी रहूं मतलब स्टेबिलिटी के साथ रहूं, यू नो, बिकॉज इट इज सम हाउ ये मुझे इफेक्ट करते, बिकॉज इंडिया में आई गो आउट आई हैव, अब जैसे आज है मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, तो मुझे, मैं ये सोच रही हूँ मैं कौन सी 3 सिचुएशन, जैसे वो टू डू लिस्ट में थी, मुझे सोचना पड़ता बिकॉज हेयर रेयरली गो आउट बिकॉज अब ठंड है, स्नो है, सब कुछ है, यू नो। सो इस घर के अंदर मुझे वो, मेरे तो सुबह 9 बजे तक सब हो जाता है, सब प्रैक्टिस से सब कुछ, मतलब और बिफोर सेशन इवनिंग 1 घंटा और ग्रैटिट्यूड, मतलब आई एम डन विद माई ऑल, जो जितना मेरे को लगता है मैं मुझे करना चाहिए वो सब हो जाता है। सो मेरे को फिगर आउट नहीं ये हो पा रहा कि मैं इसको कैसे, हाउ, मतलब मुझसे ये भी नहीं पूछा जा रहा कि मैं क्या पूछूं, कि दिस इज आई ओनली सेंस कि मैं इस सिनेरियो को कैसे फिगर आउट करूं जो पिछले 10 या 9 ईयर से हो रहा है। पहले मुझे पता नहीं लगता था कोई इंटेंशन है या नहीं, बट सिंस दीज प्रैक्टिसेस नाउ आई एम लाइक क्यूरियस टू नो कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो इफ यू कैन हेल्प, मुझे समझ ही नहीं आ I रहा will not honestly. be able to help you why this is happening, because this you have to ask your subconscious mind. But what I would like to advise you, Sunaina, and also like having known you at personal level, is that, you know, like there has to be one constant affirmation that you need to keep doing, is that my life is constructively busy, very exciting, and very happening. You know, so when every day of your life is like that, then you will see that suddenly life में इतना action हो जाएगा आपके, आपकी जरूरत से ज्यादा पीसफुल लाइफ हो गई है, ठीक है? Yeah, तो आपको yeah. एक्साइटिंग, हैपनिंग, जॉयफुल, फुल ऑफ फन एंड लाफ्टर, यू नो, लाइक बहुत कंस्ट्रक्टिवली आप बिजी रहना चाह रहे हो, यू नो, दैट्स Yeah, व्हाट आई फील. सो दैट yeah. हैज टू बी अ कांस्टेंट. आप यूनिवर्स को ये अर्जी तो डालो कि मेरी जिंदगी को ऐसे बनाना है, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ सो हैपनिंग एंड सो एक्साइटिंग एंड सो एक्शन पैक्ड दैट आई एम रियली लविंग इट. और बड़ा मजा आता है ऐसी ऐसी जिंदगी में, क्योंकि मेरी ऐसी है ना सुनैना. आप ये करो एफर्मेशन, आप देखना कि आपकी जिंदगी कहां से कहां जाएगी, इतना मजा आएगा, while at the same time बैलेंस रहेगा. ऐसा नहीं है कि क्लटर करना. What I mean to say is like full of that joy, love, laughter, action, excitement, and making life very happening. और अपने आप पता नहीं कैसे होने लग जाएगा. somebody will say that why don't you come as a part-time consultant at my work, and you know, वहां जाओगे तो आपको ऐसे happening friends मिलेंगे जो party people हैं, तो उनके साथ आप वीकेंड पे जाने लग जाओगे. तो आपको ना एक नए नए ब्यूटीफुल रास्ते बनेंगे जिंदगी से, जिसपे चलने में आपको बहुत मजा आएगा. तो आप उस पे वर्क करो सुनैना. Yeah, so अभी I फिर the word you said I picked, जो मेरे को एकदम से बहुत आपने काफी जो बोली, बट जो मैंने मेरे सबकॉन्शियस ने पिक किया, एक्शन पैक्ड लाइफ, लाइक हाँ, कंस्ट्रक्टिवली बिजी एंड द हाँ, एक्शन कंस्ट्रक्टिव पैक्ड एक्शन, लाइफ. ऐसे कि जिसमें पैसा भी आ रहा है, जिसमें आप अपना टाइम शेल आउट कर रहे हो, जो टाइम दे रहे हो वो बहुत वैल्यूबल है, और आप एंजॉय भी कर रहे हो एट द सेम टाइम, और बड़ी एक्शन पैक्ड लाइफ है. मतलब आपको पता है कि ओके आज का मेरा कैलेंडर ये है, तो अपने आप इमेजिन करो कि रोज सुबह आप अपना कैलेंडर बैठ के उसको सॉर्ट कर रहे हो कि अच्छा इतनी बजे मैं ये करूंगी, इतनी बजे ये. आपका रीडिंग, राइटिंग, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से हो जाएगा बहुत आराम से. सो आप वो कर एंड लो, डू उसके बाद सी, डज आई इट मीन हैपन, वी कैन क्रिएट एनीथिंग. डज इट हैपन समटाइम कि जैसे मतलब स्टेट कम्स कि व्हेन यू, ऐसा नहीं कि यू डोंट वांट टू विजुअलाइज, इट्स लाइक यू फील इट्स ऑलरेडी बीन डन, यू नो, मुझे वो फीलिंग आती है. जैसे सपोज जो मेरी टॉप 10 डिजायर है, जो भी ड्रीम लिस्ट है, इट इज लाइक फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज एवरी whenever I'm wake, like I am in my conscious mind, subconscious mind. तो मुझे विजुअलाइजेशन में मतलब मुझसे अब होता नहीं है उन सब चीजों, बिकॉज इट्स बिन, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिन डन. आई मीन Well, मैं that is where we बिल्कुल need ठीक to कह reach, रहे so हो. it's okay. सो आई मीन दिस इज लाइक वेरी पीसफुल लाइफ, all comforts, मतलब overflow comfort luxury, but I am looking for some adventure, you know. You want to add value to your life, and why not? You should. Yeah, इतना इतना yeah, टैलेंट, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सारी चीजें जब अपनी जिंदगी के अंदर घुसा ली हैं, तो उसको अब तो फ्लो तो करना है ना लोगों को. मतलब yeah, you are a channel now. Suppose you're yeah, working in an office now, you have like 8 girls working there and 10 guys working there. उनकी जिंदगी को कौन टच करेगा? वो आप ही की वेट कर रहे हैं ना कि अब ऐसा कोई पावर सोर्स आए जो अपनी लाइट से हम लोगों की भी, हमारी जिंदगी के अंधेरे एरियाज को भी रोशन करे. तो ये सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं,
तो ये दूसरों को ही तो मुनाफा देने के लिए होते हैं। मतलब अगर मैं सपोज कोई एक इंसान है जिसका बिजनेस जैसे मोहित जी का ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका बिजनेस है, सपोज वो मतलब 5 करोड़ रुपए अब हर क्वार्टर में अगर वो कमाने लग रहे हैं, है ना, तो 5 करोड़ रुपए अपने तक थोड़ी ना सीमित रखेंगे, वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो लग्जूरियस चीजें करेंगे, वो अमेजिंग अलग अलग बहुत ही लग्जूरियस ट्रैवल्स पे जाएंगे, एटलांटिस होटल में दुबई में जाके रुकेंगे, तो वो इकोनॉमी को भी तो कर रहे हैं ना। मतलब अलग अलग कंट्रीज की अपनी कंट्री को, तो कोई भी चीज कोई भी बहुत ज्यादा रोशनी होती है, आप उसको लिमिट करके रख ही नहीं सकते। अगर कहीं डायमंड पड़े रखा हुआ होगा तो वो चमकेगा ही, आप उसकी चमक को रोक नहीं सकते, तो वो चमकेगा और वो लोगों के आईज को बहुत सूद देगा, बहुत वो वाली फीलिंग देता है। तो इसी तरह अब आप डायमंड अगर बन गए हो तो आपको जाना ही है ना हर जगह पे। मतलब लोगों की भी तो, उनको भी तो छूना है ना उनकी जिंदगी। तो यही तो मायना होता है जिंदगी का, यही मायना है कि पहले आप अपने 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 अपना कप भरो और फिर लोगों को पिलाना शुरू करो। ठीक है, बिकॉज बहुत लोग सफर कर रहे हैं दुनिया में आजकल, जिनको रास्ते ही नहीं मिल रहे हैं, उनको रास्ते ही नहीं मिल रहे, उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेप आई शुड बी टेकिंग। वो बेचारे ड्वेल करते जा रहे हैं अपनी मिजरीज में, उनकी जिंदगी में कोई रास्ते ही नहीं है खुशियों का। मतलब सारे ऐसे लगता है कि लोहे के दरवाजे हैं और वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो फिर हम ही तो जाएंगे ना वो एक दिया लेके उनके सामने कि आओ, दिस इज द लैंटर्न एंड कम आई विल शो यू द वे। दैट इज हाउ इट इज। So yes, it's not about us, it's about everyone around us also. है ना? Sunana, can I add something to it? हाँ जी, हाँ हेलो, जी। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो बड़े सालों से, तो मैं क्या करती थी, जब भी इंडिया का ट्रिप होता था वापस आने के बाद ना इंटेंशन डालती थी कि ये मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, और वो मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बनता था। उसमें सब कुछ डिफरेंट होता था, चाहे इन कलेक्शन में लाइफ चलती गई है, बच्चे बड़े होते गए हैं, पर अगर हम वो देखते थे ना, 1 साल बाद गई हूँ, 2 साल बाद गई हूँ, तो वो मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर होता था। यू आर गोइंग टू इंडिया, कम बैक विद द इंटेंशन एंड you will see the result. Sure. Thank you so much. Yeah. Very Thank you. beautifully said. Thank you so much. Yes, Shalini, you want to share something? Yeah, ma'am. Ma'am, I want to share about the magnificent outcome. Exactly a year ago, I was going for a wedding to Goa. That was a destination wedding. और मेरे घर से एयरपोर्ट का ड्राइव इज नॉट मोर देन 30 मिनट्स. सो जैसे 3 घंटे का टाइम लेके हम निकले, वी वर नॉट लेट एट ऑल. जैसे 3 घंटे का लेके और आधा घंटा उसका. बट जो एरोसिटी के पास सारे 5 स्टार होटल्स हैं, उसको क्रॉस करते वक्त उन दिनों वहां पर बहुत ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसके कारण मेरा जो आधे घंटे का सफर था, 2.5 घंटा आई हैड टू बी इन द ट्रैफिक, which was never thought about. So airport वो security check के पास and this and that, we were very sure आज flight miss हो गई, आज नहीं होगा, being on time and everything. So Sunil and me decided that we are just going to be very happy, and I started doing thank you. So whatever will be, we are very happy. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक और टिकट खरीदनी होगी, खरीद देंगे. So happily thank you करते हुए निकल रहे थे. But airport से जरा सा पहले Sunil got a message that our flight has got delayed. So it was so wonderful. मतलब मुझे सच में मैजिक लगा. It's never been like that. और बिल्कुल मैं आराम से, हमने सब कुछ किया, enjoy किया, अपना लंच भी, and फ्लाइट भी आराम से पकड़ेगी. नंबर 1. सेकेंडली, आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय ड्रीम लिस्ट में एक मेरा हेल्थ इशू, क्या बोलूं, लाइक आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड विद यू द knee problem, and another one was during the corona time, दो मैंने अपनी डाइट को बहुत अच्छे रखा था, we were all eating healthy everything, but और मुझे कोरोना भी नहीं हुआ, लेकिन वो बूस्टर डोजेस, व्हाट आई एम थिंकिंग, बूस्टर डोजेस एंड ऑल जो लगे थे, उसके बाद जब जैसे ही कोरोना ठीक हुआ एंड वी वर यू नो वी कुड गो टू द पार्लर. So the haircut person who was going to give me a haircut, he suddenly showed me on my head कि मैम आपके ना पैचेस दिख रहे हैं. सो एलोपेशिया टाइप जिसको बोल सकते हैं. एंड मैंने घर में जब आकर काउंट किए, माय डॉटर डिड दैट फॉर मी, एंड दे वर 22, 23, 24 ऐसे दिखते थे.
So I was like, my God, what will I do? You know, मतलब मेरा thought वहां तक पहुंच गया था कि ओके विग भी पहनना पड़ सकता है ये वो. एंड मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट, द बेस्ट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट आई विजिटेड, और मेरे ख्याल मैंने 6-7 मंथ्स के लिए उनसे मेडिसिन भी लिया, जिसमें अप्लाई करने का भी था और ये तो 6 महीने तो मैं शिद्दत से, बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई डिड दैट. और मैंने देखा वो टच से मस ही नहीं हो रहा, इट वॉज देयर ओनली. तो डॉक्टर्स ने भी ना वो बढ़ा ना वो, बट वो गिनती उतनी ही वो रहे ही रहे. सो अगेन आई वॉज वेरी थैंकफुल, एटलीस्ट इट्स नॉट इंक्रीजिंग, इट्स देयर ओनली. बट देन आई सेड नो मोर ऑफ मेडिसिन, ये बहुत हो गया, इसको छोड़ो. सो आई थिंक आज उस बात को 1.5 साल हो गया. देयर इज नो मेडिसिन, नथिंग, बट ओनली थैंक यू and visualization and putting into dreams. And yesterday I had to go for my haircut, so main jab gayi, so he said, ma'am, how's your this thing? I said, I really don't know, I've stopped checking, jo hoga theek hai. Then he looked and said, ma'am, it's all filled, hair are coming on the head. So I am so grateful, so wonderful, everything is fine. Thank you, ma'am. Amazing. Be blessed with a lot of nice, thick mane, Yes. soft, heavy. Thank you, ma'am. बस यही सारा दिन For गाना girls, गाती hair हूँ. matter a lot. We call it a बहुत bad headache sometimes Yeah. when the hair is not looking that great. हमको party में भी Yes, जाने को exactly, hair ma'am. day. Exactly. Yeah. है ना? So that was my So sharing. yeah, thank you. Thank you so Thank you. much. Amazing. Thank you, ma'am. Yes, Bitty ji, you want to? We can just keep it a bit shorter because there's Meena also, as she has to share it. So we मैम can. मैं भी मैग्निफिसेंट आउटकम का ही बताना था कि ऑन दिस करवा चौथ मेरे मम्मा का टिकट बुक हुआ था. 5 o'clock उनका ट्रेन था. तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही, हमारा ड्रग स्टोर है तो हम लोग मतलब दोनों ही देखते हैं टाइम बाय टाइम, जैसे एक टाइम होता है. तो उन्होंने कहा तुम कैब करके चल जाना, मैं शॉप पे बैठूंगा. मैंने कहा नहीं, मुझको लगेज और वो सब कुछ के साथ मैनेज नहीं होगा, आप चले जाना. बट अंदर से मेरा दिल था कि हम दोनों जाएं, और मैंने सुबह ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि हम दोनों जाएंगे. जबकि ड्रग स्टोर का टाइम 5 o'clock है, तो वो बिल्कुल पीक टाइम है, नहीं छोड़ सकते थे. पर मैंने सुबह कह दिया एंड देन स्टार्ट चैंटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी करती रही. और वो था कि नहीं, हम दोनों ही ड्रॉप करने जाएंगे, क्योंकि लगेज भी है, वो थोड़ा ओल्ड एज है, तो हो सकता है कि हम लोगों को ब्रिज भी क्रॉस करना पड़े. तो जैसे ही मेरे हस्बैंड 3 o'clock क्लिनिक पे गए, तो उन्होंने कहा कि आज शाम को मैम पेशेंट्स नहीं देखेंगी, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी और उस दिन करवा चौथ था. तो उन्होंने कहा पेशेंट्स नहीं देखेंगी. तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम दोनों ही जाएंगे. तो मैं बड़ी खुश हो गई अंदर से. हम लोग गए, वापस आए बड़े पीसफुली, बिकॉज पता था पेशेंट नहीं देखने. उन्होंने घर आए, घर आके मुझे बोलते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं आज. तो हम लोग चाय पी रहे थे घर आके. मैंने कहा चलो, बोलते पहले चाय बनाओ फिर कहीं घूम के आते हैं. और जैसे ही हम लोगों ने टी खत्म की, हमको क्लिनिक से फोन आया, मैम पेशेंट देख रही हैं. तो मैंने थैंक यू किया गॉड को कि देखो हम लोग इतना पीसफुली गए और इतना पीसफुली वापस आए, और उसके बाद मैम ने पेशेंट्स भी देखे. तो मतलब हम शायद वहां भाग भाग के जाते ट्रैफिक में वैसे भी, तो थोड़ा मतलब वो बहुत स्मूथ रहा. तो मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम तो काम करता ही है. और सच में ही शॉपिंग के समय भी मैं अक्सर यूज करती हूँ, और हमेशा मैं ओवर परचेज चीजें करके आती हूँ. 1 लेने जाती हूँ, 2 लेके आती हूँ. तो ये मेरे लिए तो बहुत काम करता है. तो मेरे को ये था जो कि न्यू कमर्स को शायद थोड़ी हेल्प हो Yeah. जाएगी. Yeah. Thank you so much, Bitty ji, for sharing. Yes, Meena. Hello, ma'am. Good morning. Morning. Yeah. So I have a sharing कैमरा that ऑन from करना last, पड़ता I है think, शेयर करने के लिए. ma'am, actually किचन में वर्क और ये सब चल रहा था. अच्छा, एक किचन सेकंड में बस, वर्क सॉरी. कर रही हूँ. Okay. So yeah. So hi everyone. Good morning. तो शेयरिंग ये थी कि from last I think 15 or 20 days I have fulfilled my 4 dreams. So out of 10, 4 have been picked up and सच में मैम मुझे नहीं पता how. आई नो रीजन भी ग्रेटिट्यूड ही है जिसके कारण इतने ऑसमली मेरे सारे ड्रीम लिस्ट पूरी हुई है. बट हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू, जो आप इतना डेडिकेशन से हमें एवरी मॉर्निंग आप सिखा रहे हो. हैट्स ऑफ टू दिस रोहंडा बाय ने, जिन्होंने हमें लाइफ जीना सिखा दिया है कि लाइफ को जीते कैसे. मतलब हमने कभी सपने देखे ही नहीं थे मैम कि सपने भी हम देख सकते हैं. तो वो सपने देखे और वो पूरे हो रहे हैं. बहुत मजा आ रहा है, बहुत. तो थैंक यू सो मच. उसमें से एक मेरा दुबई का ट्रिप, जो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि 11 साल के बाद हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे.
आफ्टर 11 years, क्योंकि हमने कभी सपना ही नहीं देखा था कि हम कभी इंटरनेशनल ट्रिप कर भी सकते हैं. देन आई हैड वन वाज मीटिंग विद समवन. वो हमारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट घर की किसी के साथ मीटिंग होनी थी ऑफिस वर्क को लेके एंड ऑल. तो वो ऑल ऑफ अ सडन उनका इनवाइट आया हम लोगों को. वन वाज फॉर हैंडबैग, एमके का हैंडबैग का था मेरा. वो भी बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ. वी वेंट टू द शॉप और पापा मम्मा और ईना हम सब ऐसे गए. तो उन्होंने बोला कि चलो बताओ कौन सा हैंडबैग लेना है ना. तो आई वाज वेरी कैजुअल. मैं कहा नहीं नहीं मुझे कोई हैंडबैग नहीं चाहिए. देन आई थॉट कि अरे मेरी ड्रीम लिस्ट में तो है कि हाँ मुझे कौन सा हैंडबैग चाहिए. ईना वाज कमिंग एंड आस्किंग मी अच्छा कौन सा वाला चूज करूँ क्या करूँ. मैं कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी. पता नहीं कहाँ से मैजिक क्यों मिला. एंड देन फाइनली आई गॉट द सेम हैंडबैग जो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में फोटो लगाई हुई थी. आई विल शेयर विद यू ऑल. इनफैक्ट मैंने अपने मॉम डैड को दिखाया, देखो ये रही मेरी वो ड्रीम लिस्ट की फोटो जिसमें वो सेम कलर सेम पाउच सेम हैंडबैग मिला हम लोगों को. एंड फोर्थ, बच्चों का एक ड्रीम था जो अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि हाँ हम कौन से वाले बड़े वाले प्ले एरिया में जाएंगे हम लोग. 1 साल से वो बेचारे वेट कर रहे थे कि कब टर्न आएगी. एंड आई थिंक मैंने 1.5 month पहले लिखा था कि चलो ठीक है मैं अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखती हूँ. एंड वी वेंट टू दैट प्ले एरिया. तो वो एक ड्रीम हमारा पूरा हुआ. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Amazing. Thank you for sharing. 4 ड्रीम लिस्ट में से होना पूरा, पर जितनी शिद्दत से अगर मैं सेशन सुबह लेती हूँ उतनी शिद्दत से आप सीनियर सिटीजन्स का भी लेते हो शाम को. सो इसीलिए इट्स अ हाई फाइव. So yeah, amazing, and God bless you with more and more super success in all the areas of your life. And this message is for everyone. Okay, so believe in your dreams. Yes, dream big and enjoy and have a blast in life. Okay, so thank you so much. Bye bye. Have an awesome day today. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. With awesome